Somehow I woke up out in Beverly. So welcome back friends to a brand new episode। तो आज मैं आपको सिखाने वाला कुछ बेसिक टिप्स जिससे आप इम्प्रूव कर सकोगे अपने शेडिंग स्किल्स को। अगर चैनल में नए सब्सक्राइब करना ना भूले विद पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू गेट नोटिफाइड। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो। तो मैं आज यूज़ करने वाला हूँ अप्सरा के 6 प्रीमियम कलर पेंसिल्स। पहले आप वो सरफेस जहाँ पर आप करेंगे उसको आप फिल कर दीजिए एक सिंपल कलर से, जिसकी मैं कर रहा हूँ। तो वो होने के बाद अभी सेकंड में आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा डार्क करना पड़ता है। जहाँ पर आप इफेक्ट देना ज़्यादा चाहते हैं वहाँ पर थोड़ा सा डार्क कीजिए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और ये पार्ट ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है कि आपको ये वाला पार्ट को थोड़ा ज़्यादा डार्क करना है तो आप कर सकते हैं यूजिंग अ ब्लैक कलर पेंसिल। Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. How'd I end up alone? I'm not certain. Girls impolite in the club every night. तो अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि आप एक ट्रायंगुलर सरफेस में आप कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ एक ग्रीन कलर पेंसिल। और वैसे ही सेम मेथड में आपको एक साइड से दूसरे साइड को डार्क लाइट इफेक्ट देना पड़ता है, जैसे कि मैंने सर्कल में किया था। Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. How'd I end up alone? I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. एक ट्राई करते हैं अगर हम लोग इस कलर से ब्लेंड कर सकते हैं कि नहीं, पर मेरे ख्याल से ये ऐसा कलर पेंसिल ब्लेंडिंग में अच्छा नहीं है। तो लेट्स ट्राई इट। Call my own, feels like I'm better off alone. So sad inside and hopeless. These Hollywood hoes never notice. Can't get back on. Girl, I miss you. Can't get back on. Girl, I miss you. Somehow I woke up out in Beverly. सो फाइनली गाइस, ब्लेंडिंग करने के लिए मैंने कोशिश किया था पर ब्लेंडिंग इतना हुआ नहीं। सो अगर आपको ऐसा लेयर चाहिए जैसे कि मैंने ये सब आर्टवर्क में किया है शेडिंग लेयर्स, तो आप इस मेथड को यूज़ करके आप थोड़ा अपने शेडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं लास्ट कंक्लूजन में आना चाहता हूँ कि आपको अगर अच्छा शेडिंग में इम्प्रूव करना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा डेली, क्योंकि ये सब एक साल एक महीना में नहीं होने वाला है। आपको प्रैक्टिस चाहिए। सो यू कैन प्रैक्टिस डेली टू इम्प्रूव एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे जो बोलना था वीडियो में मैंने बोल दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर दीजिए, और फाइनली दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो एनीवेज ये
अप्सरा के 26 कलर पेंसिल्स अच्छे हैं, आप ले सकते हैं। लिंक इज़ गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन।